Hello everyone, this is Rushikesh Bankar, lecturer in Electronics and Telecommunication Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today we will start the unit number 4, that is television receivers, and the lecture number 1's topic is color TV receiver. तो आज हम यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टेलीविज़न रिसीवर्स और आज के लेक्चर का टॉपिक है कलर टीवी रिसीवर. So before starting our today's lecture, we will see what are the different learning outcomes. So the first learning outcome of our today's topic is you will able to learn about the color TV receiver. Then you will able to know the types of PALD decoder. So these are the two learning outcomes of our today's topics. Now color TV receiver. So this is the complete block diagram of color TV receiver. Then PALD decoder, and this is the block diagram of PALD decoder. Again this is PALD decoder. So the chroma signal selection, this is the block of PALD decoder. So its function is to select the chroma and color burst signal from the incoming CCVS signal by the chroma signal selection unit. तो इसका फंक्शन क्या होता है? टू सिलेक्ट द क्रोमा को सिलेक्ट करते हैं और कलर बस्ट सिग्नल कहाँ से? फ्रॉम द इनकमिंग CCVS सिग्नल बाय क्रोमा सिग्नल सिलेक्शन सर्किट. उसमें जो क्रोमा सिग्नल सिलेक्शन सर्किट होता है उसके विद द हेल्प ऑफ क्रोमा सिग्नल सिलेक्शन सर्किट it selects the chroma and color burst signal. Then it essentially consists of band pass circuit whose center frequency is chosen to be equal to that of chroma sub carrier itself, that is 4.43 MHz. तो उसमें कंसिस्ट क्या होता है? बैंड पास सर्किट होता है जिसका सेंटर फ्रीक्वेंसी चूज किया जाता है इक्वल टू जो क्रोमा सब करियर का फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 4.43 मेगाहर्ट्ज. उतनी फ्रीक्वेंसी बैंड पास सर्किट में चूज किया जाता है. Then next is the first chroma amplifier. So the chroma and burst signals are amplified by the first chroma amplifier, which is controlled by the DC voltage developed by the automatic chroma control, that is ACC amplifier. तो जो एम्पलीफायर होता है उसका फंक्शन क्या होता है एम्पलीफायर का? टू एम्पलीफाई टू स्ट्रेंथन द वीक सिग्नल. सो जो क्रोमा और बर्स्ट सिग्नल्स होता है उनको एम्पलीफाई करता है. क्या कौन एम्पलीफाई करता है? दिस फर्स्ट क्रोमा एम्पलीफायर जो कंट्रोल किया जाता है डीसी वोल्टेज से, जो डेवलप होता है ऑटोमेटिक क्रोमा कंट्रोल, दैट इज एसीसी एम्पलीफायर से. देन another is second chroma amplifier. The second chroma amplifier incorporates color saturation control unit, and the output of color killer also feeds into it. Now next is a PAL delay line. So this network separated U and V signals with R, then fed to the respective demodulator. Then the gated burst amplifier. The gated burst amplifier separates the burst pulses and amplifies them a level suitable to operate the burst phase discriminator. So this is the gated burst amplifier in PAL delay line. Then automatic chroma control, that is ACC unit. So the magnitude of the voltage so fed back is proportional to the magnitude of the burst and therefore to the amplitude of the chroma signal itself, and this voltage is used to control the first stage of chroma amplifier in such a way to ensure the constant chroma signal amplitude. तो ये जो वोल्टेज होता है ये यूज किया जाता है टू कंट्रोल द फर्स्ट स्टेज ऑफ क्रोमा एम्पलीफायर. Then the burst phase discriminator, that is BPD. So it is sensitive to burst pulses and is designed to detect any differences which might exist between the phase of the burst pulse and that of the reference oscillator. So it produces at its output a DC voltage whose magnitude and polarity are proportional
to the magnitude and direction of the detected phase difference. तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? डीसी वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड और पोलैरिटी वो प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डिटेक्टेड, जो डिटेक्टेड फेज डिफरेंस होता है उससे वो प्रोपोर्शनल होता है. देन बर्स्ट फेज आइडेंटिफायर. So this burst phase identifier circuit is able to identify the phase relationship of the color burst. तो ये जो burst phase identifier होता है इसका फंक्शन क्या है? To identify the phase relationship of the color burst. Now the burst phase identifier. So this circuit is able to identify the phase relationship of the color burst. And 180-degree switch is, this switch is used to periodically invert the waveform fed to the V signal demodulator. Now color killer control. So this is the just a half wave rectifier which produces a steady DC potential from the succession of burst pulses. तो ये जो कलर किलर कंट्रोल होता है ये नथिंग बट अ हाफ वेव रेक्टिफायर होता है जो प्रोड्यूस करता है स्टेडी डीसी पोटेंशियल फ्रॉम द सक्सेसिव ऑफ बर्स्ट पल्सेस. So during black and white transmission, the DC potential is absent and hence biases the second chroma amplifier to the cutoff state. Now PO मैपिंग. तो आज के टॉपिक्स को PO1, PO3, PO6 और PO7 मैप करते हैं. सो दिस इज द PO मैपिंग. थैंक यू.